We are shooting this episode second time. Yeah, it's an AI-based multi-carrier shipping platform. What's the one thing in business you went after and totally missed? All right, welcome back, viewers, to our episode number 89 of our podcast series, The Young Tuck Dialogues by Crosstickle. And today we have Zaiba, one of the very special guests. And today's episode, we have a lot to discuss about. Zaiba, first of all, before we talk about introduction, how are you feeling to be on the episode? I'm doing great. And thank you so much, Anmol, for inviting me to this podcast. Looking forward to share my insights and learning to the audience. Yeah. And also, fun fact, audience, we are shooting this episode second time. Yeah, This sure. was to be launched around episode number 84, I think, and now we are launching it at episode 89. But yeah, I hope this one goes Okay, far better than the earlier one. perfect. Without taking any more time, Zaiba, talking a bit about your introduction, you have taken so many stances in life. Why not you only give a brief about your journey so that our audience knows about you, and then I will be starting with my questions. Perfect. So, myself, Zeba Sarang, I'm the co founder of I Think Logistic. It's an AI based multi carrier shipping platform. We started this company in 2017 with five friends, and now we are a team of more than 200 plus people pan India. And we have been able to do this business being a bootstrap and a profitable company. Last year, we did more than 100 crores of revenue. And my entrepreneurship journey started back in 2010. In fact, when I was in my last or final year of graduation of BSc Computer Science, me and my co-founder, we have built a software which was a student database management system SDMS. And we Okay. thought कि college project को हम एक market में as a product सो विथ फुल डेडिकेशन एक्साइटमेंट हमने हमारे प्रोडक्ट को एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट किया एंड हमने सोचा वी वर जस्ट क्वाइट यंग एट द टाइम वी थॉट कि हम इस एक आइडिया से पूरी दुनिया बदल देंगे उस आइडिया को लेकर हमने मार्केट में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड वी when we started or launched our first tech company Depazer Infotech in 2011 इनफैक्ट हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने से पहले ही हमने हमारी कंपनी फॉर्म कर दी थी we got a big hit or failure, I would say, setback. हमको एक मार्केट में रियलिटी चेक मिला एंड विच वॉज दैट कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था दैट वाज अ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन और उस वक्त 2011 के टाइम इंटायर टेक्नोलॉजी वाज मूविंग इनटू वेब बेस्ड सोल्यूशन हमने बनाया था डेस्कटॉप एप्लीकेशन वेब में जाना था वी हैव टू पाइवट आवरसेल्फ क्विकली हमने फिर हमारा सोल्यूशन चेंज किया एंड देन वी मूव टू कस्टमाइज software designing to the different brands and different companies. We work with big So you Fortune became 500 companies of from a India. software company to a service-based company. That was the transition. Yes, product company. So we Product company. started with a product. We transitioned ourselves into service business, but we always wanted to have our own product. So फिर So how हमने was that transition? e-commerce Because products are totally different and then services. Customer reality hits in. Customer is telling you what you need to do. see I would say this very honestly this that was a need of the hour. So उस वक्त हमें ये था कि हमें सस्टेन करना है हमारे बिजनेस को हमारी कंपनी जो हमने फॉर्म की है एंड नाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन द क्लाउड बेस्ड और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री और उस वक्त एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट हमारे पास कोई प्रोडक्ट का आइडिया नहीं था तो हमने सोचा रादर देन वी जस्ट थिंक कि अभी कोई प्रोडक्ट ढूंढे बनाए इससे बेटर है लेट्स स्टार्ट विद द सर्विसेज बिजनेस सो दैट विल ऑल्सो गेट सम लर्निंग अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद फिर हमने हमारा प्रोडक्ट भी लॉन्च किया और आई थिंक लॉजिस्टिक इज वन ऑफ आवर प्रोडक्ट जहां से वी हैव बीन एबल टू सर्व अराउंड 10,000 e-commerce sellers pan India. So this is what a small quick journey of building I think logistic or my own entrepreneurship journey. So I think so. You told your journey till okay. So you transition from a software company to a services company, and then again to software. So how from developing custom web solutions to I think logistics? How did that idea came in? How did that transition happened? Okay, perfect. I forgot to add one more failed business in this overall journey. So Okay. when first we started Depazer Infotech, a software-based company in 2011,
And as I have told you, we always wanted to create our own product and our own brand. So हमने 2015-16 when the e-commerce industry were booming, हमने सोचा हमारा खुद का e-commerce website भी start करते हैं. So we Okay. started our e-commerce company called Gift Punch, where Okay. we were selling antique gifts online. The entire technology or website design, marketing was done by us. We were literally getting good orders at the time. But we failed because of logistic inefficiency. We understood there is no such platform where a small seller can grow their businesses with the help of logistics. Because at the time, the e-commerce logistic companies wanted to serve big brands. Their focus was Amazon, Flipkart, Myntra, where they were neglecting the small sellers. And we found there is a huge gap in this overall supply chain Okay. for the smaller seller. And hence in 2017, officially we launched this company with 5 co-founders, where out of this 5, 3 of us were running our first tech company from 2011. Okay. And then two of the co-founders joined. They were from a logistic background. So 3 from tech background, 2 from logistic. So it was a good combination, or the best combination I would say, to build a company where we are complementing each other with the skills, with their strength. Right. That makes sense. So when you started, I think logistics, how was the journey? Like, let's talk up, because of course it wouldn't be like that. No startup goes like that. No, Anmol, it was not, and it was never like this. It was always multiple ups and multiple downs, I would say. Yeah. So the good part was, when we started, we have some backup in terms of we understood how this market worked. So that understanding was there with us. But yes, it was with lots of ups and downs and lots of learning. So what and how we did it, me and my co-founders, we were literally visiting each and every e-commerce sellers we were onboarding. We were discussing with them what exactly you want, what are your pain, apart from what was our own learning in of our failed company Gift Punch. हमने उनसे भी सीखा उनको exactly प्लेटफॉर्म पे क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं. देन माय co-founder and me, we were literally creating the screens. मतलब my co-founder was UI. literally creating a screen UI. Exactly. वहीं पर बैठे बैठे बात कर रहे हैं. I was talking to the customer, क्या चैलेंज फेस हो रहा है, कैसे करना है, and he was creating the UI in front of the customer. And just हमारा जब मीटिंग खत्म हो जाता था, we used to send this to our other co-founder कि भाई ऐसा हमने ऐसा कुछ प्रोडक्ट में हमको बनाना है, you just get implemented this. And next day or few days back बाद वो सारी चीजें रेडी हो जाती थी, and we used to submit the same to the customer कि ये आपने मांगा था, ये हमने आपको डेवलप करके दिया. Got So it. there were two part, Anmol, if I get into the deeper discussion. So here the main challenges were also onboarding the logistic partner for us, because it's a platform where we are aggregating multiple logistic partners and serving the D2C brands. हमें customers को हर business की हमें logistic partners की भी requirement होती थी, जो हमें best support, services और best rate दे सके, so that हम हमारे customers को वो सारी चीजें. तो हमें यहाँ पर भी चैलेंज होता था कस्टमर सेलर्स लॉजिस्टिक पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करने में, क्योंकि इनिशियली तो हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं कि हम In समझिए this स्टार्टिंग से industry, ही हमने. बाकी सारे जो players हैं वो बहुत ही बड़े होंगे उस time पे. What I guess is that. Correct. Correct. So it was a lots of ups and downs and lots of learning altogether, Anmol. So when you came into that market, what I guess is that जो logistics companies है वो सिर्फ बड़ी sellers के साथ काम कर रही थी, and at that time Shiprocket and all was also not there. They are your competitor, right? Yes, we can say, but we are serving two different segment. Yes, we can say they are our And you are into that competitors. segment where no other logistic company want to be in. What I understand. Not really. Now everybody wants to. They have understood the importance of D2C brand. Initially, they have not. So now any D2C brands were just starting with small number of volume, but they know they have good potential to grow with the right investor or with the right founder or right founding team, right product. So now all of the logistic company or many of the logistic companies are also wanted to work with the D2C brands
directly as well. Okay. But to give you a answer related to working with direct logistic partner and working directly with the aggregator is different value proposition altogether, which a brand will definitely understand to work uh, with direct partner or with the aggregator. Okay. Got it. That gives me a lot of clarity. So while preparing for this podcast and to have something good for our audience, I found out that you call yourself a go-getter. So talking a bit about that now, trying to understand your journey, your lessons. What's the one thing in business you went after and totally missed, but you are glad that you did it? Totally missed or totally did well? Totally missed, but you are glad that you missed it. So it's very interesting question, Anmol. So as I've said, my graduation or my education, my qualification, I was a software developer. मुझे कोड करना चाहिए था. Right. But this business circumstances were in that way कि जहां पर I was pushed by my own self. If that the way you said go getter, तो मुझे ये था कि मुझे सेल्स करना है. Because we were struggling in sales in our first company, Depazer Infotech, जहां पर brands को onboard करना है to give them services. So मुझे ऐसा था कि I cannot wait somebody else to come and do the sales for me. टीम हायर थी बट दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म. सो मैंने खुद ने वो अपॉर्चुनिटी ली. आई वॉज लाइक लेट मी डू सेल्स, जहां पर यू वोंट बिलीव अनमोल, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम अ उर्दू मीडियम. मुझे इंग्लिश सॉफ्टवेयर डेवलपर में और डेवलपमेंट फेज में होती. सो आई बिलीव वो मैंने अच्छा डिसीजन लिया जो मैंने ये चीज की. No, that is amazing. And transitioning from a software developer to sales must be a totally different journey because कहाँ एक तरफ आप लैपटॉप के आगे कोड लिख रहे हैं and then you are now in front of people selling your idea. So that is like those are two different Exactly. worlds. Right. And I personally believe, I don't know, I might be wrong, but an entrepreneur is always a salesperson. They has to be a salesperson. Matlab, you are selling not as an entrepreneur also. Anybody. Anybody, everyone has to be a salesperson. Anybody is a salesperson. Anybody has to be a salesperson because an entrepreneur is selling their idea, their product to the customers. Normal candidate is selling themselves to the organization. Product is being sold to the customer. So ये सारी चीजें हैं. तो everything is about sales, I believe. Right. No, that is true. What you said. So now we know that you got where you got the idea to start, the logistics company that you have. It's an interesting journey. Like you went into e-commerce, then you realized, oh, we don't have logistics in place, and without them, my business cannot scale. And then you started this company. And from what I understand is from the market is logistics is not seen as a very, kind of trendy industry or how the Gen Z calls it, sexy industry. So what's the most misunderstood part of building your company in this space? See, as you've said, definitely it is not a sexy industry. Nobody wants to come here because here, if you are coming to a logistic industry, you have to dirty your hands. You Yes. have to be in the field. You have to be in the ground. And we all know logistic industry is the backbone of e-commerce industry. I will say India, Without logistic, without logistics, nothing can go from here to there. yeah. And if you see, when pandemic was there, the only not only but the one of the industry which was running continuously was a logistic. So logistic is the backbone of any industry, especially if we are talking about the e-commerce. It is the backbone. So without logistic, nobody will able to grow. And what we have understood, there are logistic companies are there in the ground, but they are not able to give a great customer experience to their buyer or to their end consumer. There we have then we fit this product in such a way where by solving the logistic inefficiency, creating a great customer experience to the end consumer, we are able to build our strong position or value proposition to the brands. Right. For me, I will tell you when I realized the importance of logistics is when I went to Ladakh. So that's where when I conversated with those people. So the route from Manali, it stays, I think, shut for 8 months, and the other side also, it stays shut for the most of the year.
and they had that just 4 to 5 months period of time to take all the things from all the places to their place. After that, like they are isolated, Right. and there are so many areas like Leh to chalo, it's main, but what about the other places? So that's where I was also thinking during my journey to Ladakh that how important logistics is. If for a single day these guys stop, they won't have anything to eat. They won't have anything to run their vehicles because fuel is also transferred via like that. Exactly. So for me, Exactly. that's where I realized the importance of logistics. It did not came from the cities, but it came from the mountains. Right. Very And I, true. yeah. So so there is one more thing. Like if I talk about D2C brands, so they are bleeding margins. Yes, recently I went to Bangalore. So one of my clients, we were talking, and they are bleeding margins. And most of the D2C brands are these days. And returns also happen, delivery delays happen. So what is the first system you would tell them to fix? As you know, being from this industry, working with 10,000 plus e-commerce vendors, because what most founders focus is on, I am running ads, let's optimize the ad cost. But what about your other overheads, which are actually, if you see, after marketing there are so many more important things. You have logistics, you have staff salary, what not. And many people I see, they do not Right. calculate that, they just stick to marketing. अच्छा मैंने इतना खर्चा किया इतने में आ गया. Exactly. There is a studies, matlab 85% of the D2C brands got failed the first year of starting their business. There are multiple reasons. Definitely product भी एक हो सकता है, marketing भी हो सकती है, right customer fit भी हो सकता है. And what I personally believe is major reason can be a logistic reason. The major cause can be logistic because front end में आपको forward charges लगते हैं if you're shipping to the customer. If that order is getting cancelled or returned to the buyer, they have to pay the reverse or return logistic cost as well. प्लस आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट चला गया, मार्केटिंग कॉस्ट जो आपने स्पेंड की थी वो चला गया, आपका प्रोडक्ट जो सेल किया था आपने, मे बी इफ इट इज कमिंग रिटर्न वो डैमेज हो गया या नॉट एबल टू सेल टू द नेक्स्ट कस्टमर. ये सारे पैरामीटर्स जो है ना एक कैलकुलेट होने चाहिए while you are shipping to the customer or while you're fulfilling the orders to your end consumer. फॉरवर्ड चार्जेस कर लिया, जस्ट मार्केटिंग एक्सपेंस क्या क्या किया, पैकेजिंग से आपका कैलकुलेशन, उससे आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट नहीं निकलेगा. आपको ये सारी चीजें इंक्लूड कर, दैट इज व्हाट आई बिलीव वो उसमें होना चाहिए. एंड टू गिव यू आंसर कि किस तरीके से ब्रांड्स और D2C ब्रांड्स ये फोकस करें कि उनका सब है अपने पास. एटलीस्ट टाइम पर डिलीवर हो जाएगा या डिलीवर्ड होगा. एंड अदर देन दैट देयर आर सो मेनी रीजन, सो मेनी पैरामीटर्स विच वी नीड टू टेक केयर. फर्स्ट अटेम्प्ट कन्वर्जन क्या है, राइट. एटसेट्रा. नाउ सो दैट, राइट लॉजिस्टिक पार्टनर आई बिलीव अगर चूज कर लिया ना, उसके वो एक फर्स्ट चेक पॉइंट हो जाता है कि हमारा पार्सल डिलीवरी होने के लिए रेडी है. आफ्टर दैट द मेजर चैलेंज कम इज द लास्ट माइल डिलीवरी. लास्ट माइल पे भले ही आपने लॉजिस्टिक पार्टनर बेटर सिलेक्ट किया हुआ है, बट देन टू देर आर सर्टन इश्यूज हैपेंस एट द लास्ट माइल जहां पर वो पार्सल डिलीवर नहीं हो पाता कस्टमर बिकॉज ऑफ XYZ रीजन. Then our platform or platform like us help the brands to get connected to the customer, know the actual reason कि आपने parcel क्यों नहीं लिया, etc. And make sure if the customer wants the parcel, it should get delivered to them. राइट. I think in cash on delivery cases, most of the time the returns happen. Exactly. कैश ऑन डिलीवरी में ये सारी चीजें बहुत बहुत बार होते हैं. इसमें दोनों रीजंस होते हैं, कस्टमर नॉन एक्सेप्टेंस ऑल्सो और लॉजिस्टिक पार्टनर्स इन एफिशिएंसीज एज वेल. तो जहां पर कस्टमर को नहीं चाहिए तो नो बडी कैन डू एनीथिंग, राइट. बट जहां पर कस्टमर को चाहिए पार्सल बट इट इज नॉट गेटिंग डिलीवर, वहां पर वी प्ले अ रोल. Okay, got it. Understood. So this picture is clear. Let's take an example. Like this is a case study for you as well. If Amazon and delivery teamed up tomorrow to kill all mid-sized players, what's your strategy, to survive this kind of a storm? To kill the player like aggregators you're talking about? हाँ, mid-sized जो players हैं, like let's say Amazon and delivery partner, let's kill, all the mid-sized players. So what They will be want the to they want to kill the small logistic player you're talking about, or yes, aggregators? players, small e-commerce. Small e-commerce player, logistic players Yes, you're talking about. yes, See, yes. uh,
I have already given you answer, Anmol, कि India is geographically widened. No logistic partners can have that much strength till now to serve entire pan India with that efficiency. So in fact, we are seeing it. There are many regional players are coming into the picture where they are serving the specific city very efficiently. And I believe that bigger giant will not be able to do that with that efficiency So it's about because they are very much focused. So for example, we have a player in Mumbai. So they are serving only Mumbai pin codes. They have that strength. They know who can corner off Mumbai very well. so it's So about there are collaboration other in small the players, current era. If I keep it in very simple terms, right? like how Harley Davidson want to come to India, so they partnered up with Hero because Hero has such a big network. So Hero can distribute, Hero can sell, Hero can do all of that. But Harley could not. So that is what I think you are suggesting. Like Amazon, being a company outside of India, will come to India and cannot, tap into all of those regional places. They won't know the locals of Mumbai. What you're suggesting, right? So लॉजिस्टिक इज नॉट समथिंग मतलब इट्स नॉट अ डिजिटल थिंग ना कि मैंने सॉफ्टवेयर में कोड कर लिया और पार्सल डिलीवर हो अब Right. तक ऐसे टेक्नोलॉजी आया नहीं है इट्स स्टिल अ मैनुअल एफर्ट इट्स स्टिल अ ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड सो वेयर But some ह्यूमन sort of automation इंटरवेंशन इज might have रिक्वायर्ड come. इन एफिशिएंसी Like you have been building, I think you have such a vast team, so I'm sure you must have your R&D team working on some AI stuff. Why not? Let's talk a bit about that. So, in the current world of technology, so what all techie things are coming in your business? Like AI. AI is very trendy. Every other organization is talking about let's go AI, let's go become AI organization. So what all you are doing at, I think, to maybe improve the efficiency of logistics or whatever it is. see so first I would say about our recommendation engine which is completely AI driven. So in our recommendation engine we have four different parameters. There are multiple combination permutation. I'll speak the four major one. First one is the performance based logistic allocation. That is a major thing where we are implementing or where we are using AI. Rest is a very basic, simple, logical thing which we can do it without AI as well. But first one where it is performance based. So there we are analyzing very, very minute details of that orders. So, for example, there is an order of, let's say, take an example of jewelry. So, we have understood, we are analyzing this type of jewelry or this type of product. Maybe it is semi precious, not precious. I'm not talking about the precious jewelry, imitation jewelry kind of a thing, where there is a pin code of Mumbai. One logistic partner X is performing very well on that pin code, but they have higher number of damages on that pin code because ज्वेलरी इज अ डेलिकेट Yes. प्रोडक्ट वी हैव अंडरस्टूड कि ये पिन कोड पे उनका काफी ज्यादा हाई रिटर्न्स और हाई डैमेज हुआ है सो लेट्स नॉट असाइन दैट लॉजिस्टिक पार्टनर लेट्स गिव एन चांस टू अनदर लॉजिस्टिक पार्टनर जिसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और उनका डैमेज चार्जेस भी कम है so this is just a small example which I gave to you about the recommendation engine. Similarly, there are multiple things जैसे heavy weight product है 2 kg 3 kg का product है we understood कि ये logistic partner this pin code पे is able to manage this kind of weight of the shipments because they have done it in the past or they are doing it currently. We also understand कि ये pin code पे उनके पास अभी फिलहाल from our system इतने orders चले गए हैं so they are already already so many shipments to get delivered for them by on this pin code. So let's assign another partner on this pin code, etc. So this is one sort of example about the recommendation engine. जहाँ पर we monitor very important detail. Another factor comes about the address verification also. So we with our AI ML we are also understanding the addresses of the customers because generally in India there is no proper address pattern set. कि ब्लॉक होगा रोड होगा स्ट्रीट होगा समथिंग ऑन दैट सॉर्ट यहाँ पर किसी भी तरीके के से एड्रेस लोग लिख लेते हैं मंदिर के पीछे मंदिर के आगे मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके के एड्रेसेस है What सो वी आर ऑल्सो एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग AI/ML के थ्रू के एड्रेसेस को हम किस तरीके से बाइफर्गेशन कर सके सो दैट लॉजिस्टिक पार्टनर बिफोर गेटिंग इट हैंड ओवर टू देम वी आर एनालाइजिंग कि ये
एड्रेस में कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। इसी में yesterday और day before yesterday I was reading that जो अपना इंडिया का सिस्टम है, so they have brought some new पिन कोड का स्ट्रक्चर. I don't know what it was exactly, but they are saying कि up to 400 meters करेक्ट होगा या 4 meters करेक्ट होगा, like alpha numeric टाइप का पिन कोड है, and for every place they are going to assign that. I think ओह, they, आई हैव नॉट हर्ड I read दिस। somewhere in वेरी news or इंटरेस्टिंग। somewhere, yeah. I think it was on ओह, ओके, इकोनॉमिक ग्रेट। टाइम्स का वो, उसमें जो मॉर्निंग न्यूज आती है ना उसमें था। I read it day before अच्छा, yesterday, I guess. Yes, yes. तो वेरी नाइस। मुझे वही मतलब जो आपने प्रॉब्लम बोली तो उससे आई कैन रिलेट, सो आई थिंक दे आर गोइंग टू ब्रिंग दिस न्यू सिस्टम फॉर पिन कोड्स. सो इन आई थिंक लॉजिस्टिक, हमारा फोकस सिंपल यही है कि हम किस तरीके से ब्रांड्स के एक्सटेंडेड लॉजिस्टिक आर्म बने, बिकॉज लॉजिस्टिक इज अ वेरी वास्ट थिंग। आप भले ही आपके पास लॉजिस्टिक हेड हो, ऑपरेशन हेड्स हो, बट देन टू यू रिक्वायर्ड समवन with extra logistic understanding than your team to manage the entire show for you. So we राइट. believe we are the extended logistic arm for our e-commerce customer, so that the brand can actually focus on their core competency, जो उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया या मार्केटिंग में दे आर स्ट्रेंथन, तो वो उस पर फोकस कर सके, और हम उनका लॉजिस्टिक का जो भी चैलेंजेस है, इश्यूज हैं, वो हमारे एंड से हम मैनेज कर सकें। राइट. गॉट इंटरेस्टिंग. सो इसमें आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ डेटा, व्हाट आई अंडरस्टैंड. सो व्हाट्स वन pricing hack or delivery strategy no one tells to the young D2C brands that are coming up? So they are also, of course, they make their own share of mistake, but when they join you as a partner, so you know, what is something that they should absolutely know? See, I personally suggest and personally believe, don't go for the pricing wala part. मतलब there will be logistic partners, there will be brands और companies will come and tell you कि ये पार्टनर आपको 50 में दे रहा है, मैं आपको 30 में दे दूंगा, या मैं आपको 40 में, या मैं आपको 20 में दे दूंगा। डोंट गो फॉर दैट काइंड ऑफ पार्टनर। सच में यू वोंट बिलीव, ये आपके साथ अभी नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर। सो स्कैम किस तरीके का होता है यहाँ पर? इनिशियली कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए तो आपको प्राइस कम दे दिया। अनमोल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस शिपिंग कॉस्ट। इट रिक्वायर्स सर्टेन ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब ये एफर्ट है, मतलब इट्स नॉट Effort. समथिंग कि आपको शिपिंग कॉस्ट में फ्यूल चार्जेस, ह्यूमन चार्जेस, कितना सारा कॉस्ट एक्चुअली इन्वॉल्व होता है। Right. If somebody is coming and selling you at the cheaper rate, you have to understand कि इनको ये कॉस्ट कैसे मैनेज हो पा रहा है। आज 1 महीने 2 महीने के लिए तो आप 1 महीने 2 महीने के लिए तो आपको वो दे देंगे, बट व्हाट आफ्टर दैट? और वो देते ऐसे कोई भी नहीं है, उसमें देयर आर सो मेनी इश्यूज हैपेंस। इशू नंबर 1 आता है आपका वेट डिस्क्रिपेंसी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ऑफ ब्रांड फेसेस इज द रिटर्न्स, कस्टमर रिटर्न्स की वजह से अगर कस्टमर को पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। सेकंड आता है वेट डिस्क्रिपेंसी। सो वेट डिस्क्रिपेंसी ये होता है, जैसे आपका पार्सल था 500 ग्राम का, बट कुरियर कंपनी और द पार्टनर विल चार्ज यू 1 kg, Scam तो वही. Right. एंड यू नीड टू एनालाइज, एटलीस्ट 2-3 पार्टनर्स के साथ बात करो एंड देन फिगर आउट कि आपको कौन सा पार्टनर राइट सोल्यूशन दे रहा है। And what I have understood and what is my experience, Anmol, I'll tell you very honestly, there are brands who really want to pay 2 to 5 rupees or X rupees extra. It just they want to get a good service. Because nobody wants to, आप समझिए ना, उनका अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट 1000 रुपीज है, सेलिंग कॉस्ट, एंड इफ दे आर गिविंग शिपिंग कॉस्ट 100 रुपीज, अगर 105 उनसे कोई पार्टनर मांग रहा है बाय क्लेमिंग दैट कि हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, वाई नॉट दे विल गो फॉर इट? Correct. I guess it is a fair deal for any brand, Right. because But yes, आपका not many RTO people कम। think like that. I've seen also in marketing also. The way you told about logistics, I also get to know customers. So what you said is totally true and I closely understand it. But वही है कि customer समझता नहीं है पहली बारी में. नहीं नहीं, देखो आपको समझ नहीं, बट अनमोल आपको समझने वाले कस्टमर्स भी मिलेंगे। हाँ कुछ तो of course, but not everyone. यस, देखो दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने राइट सोल्यूशन राइट टाइम पर कस्टमर को पिच, पीपल आर रेडी टू गेट दिस पे, एंड वी आर नॉट आस्किंग देम टू पे ह्यूज difference. It's something which we are asking for
the services which we will be gonna provide them, Right. इसके लिए चार्जेस हमको भी लगेंगे. इट्स नॉट समथिंग के हम आपको सर्विस नहीं दे रहे हैं और उसका चार्ज ले रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है. Right. That's true. Awesome. So let's now talk about a bit about like you have your journey. You have scaled from COO to co-founder to CCO. What part of leadership still feels uncomfortable for you even today after so long years of experience? Thing. So see, I personally, that is my weakness as a leader, I would say. मुझे ना डेलीगेशन में थोड़ा सा डेलीगेशन वो मुझसे अभी भी आई नो द टीम कैन वी और विल बी एबल टू मैनेज दिस विदाउट मी, बट देन टू मुझे प्रेजेंट होना अच्छा लगता है बोल सकते हैं, और करना चाहती हूँ बोल सकते हैं, वो है. आई नो कि इफ आई एम फोकसिंग ऑन वन सिंगल केसेस देयर माइट बी सर्टन बिग अपॉर्चुनिटी आई माइट मिस. सो ये मुझे पर्सनली लगता है, फील होता है, and I'm So you working are on it. doing something to work on this because of course we all have our own blind spots. I also have some. So you are doing something to work on it, or like you are just saying, "ठीक है, देख लेंगे." No, no, नहीं, नहीं, नहीं. Definitely, I want to avoid this because I know if want to grow, if want to scale, we need to make sure certain responsibility is been taken away so that I can focus on something bigger. Right. Interesting. So let's take another case study. Let's say you are consulting a new logistics startup, okay, with just 20 lakhs to spend. Logistics startup with just 20 lakhs to spend. What would you tell them not to do in the first 6 months? Okay, very interesting question. So Anmol, logistics startup अगर कोई करेगा, so my first thing would be don't spread too much yourself. मतलब ये this is not for the any logistics startup. Anybody who's starting by themselves, कोई भी startup कर रहे हो, स्पेशली लॉजिस्टिक, क्योंकि आपने लॉजिस्टिक का बात किया है, डोंट स्पेंड और डोंट स्प्रेड टू मच इन टू मेनी थिंग्स. फोकस ऑन वेरी वेरी नीश एरिया. इफ वी टॉक अबाउट द लॉजिस्टिक, एक स्पेसिफिक एरिया ले लो. मुंबई ले लिया है फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में भी एक और स्पेसिफिक रीजन ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंधेरी. मेक श्योर करो कि आप अंधेरी के राजा हो, सो आपके पास जो भी फंड्स है, लिमिटेड है, एक्स्ट्रा है, वट एवर, यू आर फोकस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग टू ग्रो. और उसमें भी वन ऑफ माई सजेशन वुड बी focus on specific product category also. Have a analysis, have a understanding कि there are multiple logistic partner, there are different multiple product categories also. Right. So for example, हम ई कॉमर्स में लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फार्मा मेडिसिन फॉर एग्जांपल, अपैरल्स. अपैरल के लिए वी अंडरस्टूड देयर आर सो मेनी लॉजिस्टिक पार्टनर्स, फैशन एक्सेसरीज को जो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट. बट देर आर वेरी फ्यू लॉजिस्टिक पार्टनर जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी पे. सो माई ओनली सजेशन वुड बी अबाउट गेटिंग इन टू मोर स्लाइसिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी. एरिया में भी एकदम स्लाइसिंग कर लो. डोंट गेट इन टू हैवी इन्वेस्टमेंट. भले ही लॉजिस्टिक इज द हैवी इन्वेस्टमेंट सेक्शन और बिजनेस, काइंड ऑफ अ बिजनेस, बट एनालाइज करो ये कि आप किस तरीके से अपना एक्सपेंस मिनिमम से मिनिमम रख सकते हो. देर आर, अगर हमको स्पेस लेना है टू द फॉर द स्टोरेज, फाइंड अ वेंडर जो आपको पर यूनिट के स्टोरेज पे फोकस. डेफिनेटली देयर विल बी अ चैलेंज, आपको इजीली कोई मिलेगा नहीं, आपको वो पाथ भी क्रिएट करना पड़ेगा. जहां पर पहले हो सकता था पीपल वर चार्जिंग फॉर द पर स्क्वायर फीट, नाउ फोकस ऑन पर पीस स्टोरेज फीस एज वेल. डिलीवरी बॉयज को भी उस तरीके से यू शुड हैव अ नॉट अ फिक्स सैलरी डिलीवरी बॉय विद यू, इंसेंटिवाइज वाला से डिलीवरी बॉय कि एक पार्सल डिलीवर कर दिया एंड यू आर पेइंग समथिंग. डोंट मेक टू मेनी ओवरहेड्स ऑन योरसेल्फ. अगर आपको सस्टेन करना है, ग्रो करना है, प्रॉफिटेबल बनना है, इसके लिए टाइम लगेगा. बट यस, आई बिलीव अगर ये आप स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हो ना, एकदम डीप फोकस ऑन समथिंग, सो वो आप इजीली अचीव कर सकते हो. Right. That makes a lot Am I of making sense to you, Anmol? yeah, that makes a lot of sense. It's like the concept from Lean Startup, that book I was reading. So and also they tell find your niche, first become the king of that, then think about becoming the king of the world. Rather focus छोटी सी जगह वहां पे करो, फिर उससे बड़ा करो, Right. बड़ा. So makes a lot of sense. Exactly. And that's what we also focused in our own business, Anmol. It's not something I am just giving you
और ज्ञान टू द पीपल. दिस इज व्हाट आवर ओन स्ट्रेटेजी एज वेल, वेयर वी स्टार्टेड फॉर आई थिंक लॉजिस्टिक. हमने एक स्पेसिफिक रीजन से स्टार्ट किया था हायरिंग या फोकसिंग ऑन द सेल्स स्पेसिफिक रीजन से. देन वी एक्सपांडेड. नाउ वी हैव सेल्स टीम अक्रॉस इंडिया. हमने नॉर्थ को लास्ट ईयर नॉर्थ पे फोकस किया. दिस ईयर वी आर फोकसिंग इन साउथ एज वेल. सो ग्रेजुअली वी आर एक्सपांडिंग. वेस्ट की टीम तो ऑलरेडी हमारे पास काफी टाइम से थी. वी आर एक्सपांडेड दिस 2 regions more. Right. Now that's Next we'll interesting. go to east as well. So, from your experiences, one thing is there that I have heard is that everybody talks about founders resilience. So, what? Tell me about a phase where you nearly was about to shut, I think, and what kept it alive. The founder resilience is something very important, Anmol. So you will not be able to make it a big. हमारा जब when we started in 2017-18 ना, so one of the big customer, he defaulted us and the amount was around 25 lakhs. और वो 25 lakhs amount जो है ना, हमें हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर को पे करना था. और लॉजिस्टिक पार्टनर के पास हमारे सीओडी अमाउंट होल्ड थे. जनरली कैसा होता है लॉजिस्टिक में, सीओडी अमाउंट होल्ड होता है. इफ नोबडी इज पेइंग, लॉजिस्टिक पार्टनर कैन डिडक्ट द बिलिंग अमाउंट फ्रॉम द सीओडी अमाउंट एंड उनका बिल क्लियर हो जाता है. हमारा भी इनिशियली ऐसा था, बट हमने वो जो हमारा पार्टनर था, कस्टमर था, उसके साथ हमने ऐसा नहीं किया था. ही वॉज ट्रस्टेड वर्किंग विद अस फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स. तो हमने बोला कि ठीक है, हो जाएगा, दे देगा पैसे. बट ही डिफॉल्टेड अस. नाउ अभी हमारे पास पैसे नहीं थे लॉजिस्टिक पार्टनर को, एंड लॉजिस्टिक पार्टनर हमारे सीओडी अमाउंट से पैसे ले सकते थे. बट वो 25 लाख रुपीस जो थे, वो हमें हमारे बाकी के सेलर्स को उनका सीओडी अमाउंट. तो अगर वो अमाउंट हमारे पास हम पे नहीं कर पाते, ऐसे कोई कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, एंड अल्टीमेटली वी हैड टू शट डाउन. वी वर वेरी वेरी, मतलब बहुत टफ सिचुएशन में थे इस वक्त. हमने इंटरनल डिस्कशन किया. वन ऑफ माय को फाउंडर एंड मैंने, हमने ट्रैवल किया दिल्ली. दैट पार्टनर, लॉजिस्टिक पार्टनर वाज इन दिल्ली. उस वक्त ऑनेस्टली हमारे पास है ना, फ्लाइट से जाने के पैसे कैसे कैसे जुगाड़ करके वी वेंट टू द वेंडर. हमने वेट किया उनसे, उनके सीएफओ से हमने बात की, एंड ही ट्रस्टेड अस. ही गेव अस अ चांस कि कोई बात नहीं, आप हमें ईएमआई पे या कंट्रीब्यूशन पे, इंस्टॉलमेंट पे आप हमको पैसे पे कर दीजिए. वी विल रिलीज योर सीओडी अमाउंट. सो दैट रिलीफ वी गॉट इट जस्ट ओनली बाय कम्युनिकेटिंग. जनरली कैसा हो जाता है, मतलब अगर किसी को किसी का पेमेंट देना है, सो दे अवॉइड द कम्युनिकेशन. दे क्रिएट अ वॉल बिटवीन. बात नहीं करना है. बट वी टुक अ चांस कि नहीं, हम जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, एंड विल कन्विंस देम कि आप हमें चांस दीजिए. एंड फॉर्चुनेटली दे गेव अस अ चांस, और हम उसे फिर. सो आई बिलीव दिस वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट challenge we faced internally. Very good case study for everyone to learn. Open communication is the key. Exactly. Interesting. So 4 से 5 साल पहले की बात. अच्छा, okay. 2021. So Zaiba, you are like spoken at public forums. What's the one story you have always hold back, but you are finally willing to share with our audience? Something that you have not spoken in the public forums, but is a story that you really want to share. Is there a story like that? I guess I have already almost shared many of my stories in the open forum. ऐसा कोई पर्टिकुलरली याद नहीं है कि जो मैंने शेयर नहीं किया और मुझे शेयर करना चाहिए था. मेरी पर्सनल जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी मैंने सारी चीजें ऑलरेडी फोरम में आई डोंट थिंक सो. मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आप पूछोगे, हो सकता है वो क्वेश्चन से वो आंसर, बट ऐसे कुछ ऑन टॉप ऑफ माइंड याद नहीं आ रहा है. Not a problem, not a problem. अभी तो फिर मेरे पास थोड़े से रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चंस हैं, so I will ask them. So talking about, what is one of the most overrated startup advices you have got? Overrated startup advice नहीं, मतलब एडवाइस तो नहीं बोल सकते, बट overrated ये थिंग था कि आप लोग कैसे कर पाओगे, मतलब कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है. ये एडवाइस तो नहीं बोल सकती, बट एक क्रिटिसिज्म आई वुड से विच वी यूज टू गेट के नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. एंड समटाइम्स यू नो वी ऑल्सो गेट इन टू दैट कि यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, तो कैसे हो पाएगा हम. सो वो एक चीज थी जो बार बार
बोलते थे लोग कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, बट आई बिलीव वी डिड इट. That's interesting. Then next one is one D2C brand you would love to power behind the scenes. मतलब पावर बिहाइंड द सीन्स, मतलब ओके. सी, so what I do, Anmol, generally I prefer to shop from the D2C brands who are using, I think, logistic. Okay. there are multiple reasons. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट टू नो कि इनका जो शिपिंग जर्नी है वो प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब इफ दे आर गेटिंग स्टक समवेयर फ्रॉम आवर ओन लॉजिस्टिक साइट ऑल्सो, तो वो भी एक चेक हो जाता है कि प्रॉपरली सारी सर्विसेज मिल रही है, नहीं मिल. So I keep doing that from many of our existing D2C portfolio brands who are working with us. One of the brand which I definitely love it, and I carry that brand wherever I go, is the Zook bag. Okay. Nice. So I really love the brand, the way they have grown. So I believe I can be behind their back. Nice. If I think were a person, how would you describe their personality? So I believe we can consider ourselves as a Santa Claus. मतलब अगर कोई गिफ्ट लेके आता है किसी के लिए, तो हम कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, भले ही वो गिफ्ट कहीं से भी आया है, खुद ने पे किया है, तो भी हम, अगर कुछ हमारे पास हमारा शिपमेंट्स आ रहा है, तो वी गेट एक्साइटेड, वी गेट हैप्पी बाय Right. सीइंग द पार्सल कि यार मैंने ऑर्डर किया था, मुझे मिल गया, टाइम पे मिल गया, या एटलीस्ट मिल तो गया. So I believe Santa Claus we can give as a personality of, I think, logistics. We are making Nice. everybody happy. That is nice. My last question: what would be the chapter in your memoir about 2020? Be title. Corona struggle. Struggle. Yeah, it was a struggling period for all of us. It was a struggle. Perfect. On that note, I have asked everything that I had from the audience, from myself, and from the guest itself, you. So, on that note, first of all, thank you to our audience who have heard this episode to here. And second part, thank you, Zaiba, for you. You have come to this episode, given your valuable time, valuable insights. I think this is one of the good episodes that we have shot. And before I say my standard pitch, would you like to say anything to our audience? No, thank you, Anmol. Thank you for inviting me. I believe जो भी मैंने चीजें बताई, it's helpful to the audience because it's a platform where we really want to make sure people learn from each other. Right. So I believe वो मैंने justification या justify किया है मेरी opportunity को जो आपने मुझे दिया. So thank you for having me here. Thank you, Zaiba. On that note, to our audience, if you like this episode, do like, subscribe, and share. I will be posting Zaiba's LinkedIn profile link down in the description. You have any questions, you can reach out to her or as well as us. And thank you so much once again. We will be right back with another exciting episode on our podcast series, The Young Tech Dialogues. Thank you.